you have to create one, two, three, four, five tables. I'll be sharing the SQL code. Okay, what you have to do, the SQL code which I'm gonna to share with you. For that, you have to open the SSMS, SQL Server, SQL Server Management Studio, because I'm gonna to share the files of SQL Server Management Studio. Okay, so you have to open it. Let me. Okay, so file will be open like this. Once file is open, you just have to copy all the SQL, code and open your SQL server and you have to paste it and run it. इतना ही करना है. All four tables will be created here automatically. Okay, let me share it on our chat window. And I'll be sharing it on WhatsApp also. Okay, download the SQL file, open it in SSMS. Okay, copy entire code. For people who don't have Azure, you don't have to do anything. Okay, anyway, I have created the tables. I'll be sharing with you my access to the Azure SQL because I'll tell you the scenario later. First, create it. What we're going to learn today. Okay. Anyway, इसको time है फिर भी create करके रखना. And I hope everyone is using free वाला SQL server. हाँ? Those people who have created Azure account. Don't use paid वाला, otherwise bill बहुत बड़ा आ जाएगा. Okay, I know Avinash and Raja, you only two people have created the account, right? Yes, yes, sir. Okay. मेरा So हुआ did है. you have you created this SQL account, SQL server? No, no, no. Oh, Not okay. till now. Okay. ठीक है तो डोंट क्रिएट इट मैं मेरा ही दे देता हूँ डोंट वरी ओके अदरवाइज गो थ्रू दी आवर एडीएफ सेशन एडीएफ सेशन में आई हैव शोन यू हाउ एक्चुअली यू कैन यूज फ्री वाला वर्जन नॉट एंड पेड वाला अदरवाइज लाखों का बिल आएगा आपके पास Yeah, I वैसे तो have लाखों का नहीं created with SQL Server. फ्री वाला किया है Ah, yes. ओके एनीवे आपका फ्री ट्रायल है तो चार्जेस तो नहीं लगेंगे बट आप 70,000 जो है वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा ठीक है तो अविनाश यू प्लीज you know how actually to use that SQL server on Azure, Azure SQL database. Yeah, I've just gone through the interface. Yeah, it is like similar to Similar to SSM. right, correct. Similar to SSMS. Okay, you can click here. Okay, so this is the my Azure SQL, and I can click on create user ID. This is my user ID and password. This is my Shall I password. open that or then open SSMS? SSMS ओपन करके आप आपका खुद का यूजर नेम पासवर्ड डाल सकते हो मेरे भी पासवर्ड वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है आई हैव टू चेक
ये भी नहीं है। मिल गया। What was my username? DTC@admin. Password spring@00. This is my username. DTC. Can you share your screen, Avinash? Yes. Okay. अब सर्वर पे आ गए। Go back home. Click on home. डेटाबेस Okay. पे जाना था क्या? राइट, हाँ, फ्री एसक्यूएल डेटाबेस जो है ना नीचे उस पर क्लिक करो। हाँ, यहाँ पे क्वेरी एडिटर दिख रहा है। क्लिक ऑन क्वेरी एडिटर। लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट साइड में नीचे, मिडल ऑफ। ओके, फाइल उसके ऊपर थोड़ा ऊपर दो ओके। बस। इस पे लॉगिन करना पड़ेगा। डीटी साइड में नहीं रखा है आपने भी। वाह। ट्राई टू राइट योर ओन नेम। ठीक है, खुद का नाम लिखा तो बेटर रहेगा। ओके, okay, so let me share my screen till the time you open it. Okay, I'll tell you ओके। what we are going to learn today. uh, so very important topic we are going to learn. Hope you guys are able to see my screen. Yes, it is visible. Okay, great. So today we are going to learn medallion architecture in MS Fabric. Okay, so what is the medallion architecture? Okay, so in data warehouse, what we understood, we have data from multiple data sources, right? Source, it's not single truth of source. Okay, we had multiple, sources, and we are taking data from the all multiple sources and putting data into the where वेयर हाउस। warehouse, right? Okay, Yes. warehouse. We have seen this, but before that, okay, we also have staging area, right? Okay, but one things I had not explained you there about the bronze layer, silver layer, and gold layer. Okay, so that is what actually we are going to learn, and why this is important, because nowadays data is, huge, and we are managing it in the cloud, and medallion architecture in cloud is very important. Okay, Databricks, if anyone know,
We also use the Medallion architecture in Databricks also. Okay, so same Databricks part is actually already included in MS Fabric. अगर MS Fabric आपको आ गया तो Databricks आ ही गया. ओके, Databricks में हम नोटबुक भी यूज करते हैं, वहां पे स्पाइस पार्क यूज करते हैं, सेम स्पाइस पार्क वी आर गोना टू यूज इट हियर. Okay, so now what we are doing? So this is not an data warehouse now. Okay, we are not gonna to, okay, so directly take the data into the data warehouse. We are gonna to take the data into the bronze server. क्या ये मैंने बताया था पहले guys? नहीं ना? No. Okay, so let me tell you what is the bronze layer. उसमें क्या होगा? Raw data रहेगा. Raw data. What is the raw data means? What is the raw data means? Who can tell me? The data we Untransformed data. from, yes, Yes. from various resources. We're talking Raw about. data. Unstructured data. Unprocessed data. Okay, yes, a raw and unprocessed. Okay, that means, okay, here you cannot make any changes with this data. Okay, because we are taking a replica mirror. We are picking data and putting into the bronze server, where we are putting into the bronze server. So this data we cannot change. Okay, if you cannot change is okay, so उसको हम क्या बोलते हैं? Immutable data और append only. इसमें ओनली अपेंड डेटा होता है. ओके, सो अर्लियर डेटा देन यू कैन पुश इट टू द करंट डेटा. अगेन टुमारो यू कैन पुश द करंट डेटा. सो data your as it is, right? Your OLTP, right? What is the OLTP? What is OLTP? Online transfer protocol. Online transaction Why resources. we use it? To store Yes. day-to-day Day transactions. to day transactions, right? Okay, इस ये databases है. Let's say here is a CRP application or ARM application or some application is here, Google Pay application, GPay application. इसका ये database है जिसमें आपका सब record जो है एक database में आ जाते हैं, is called OLTP. But this OLTP has a lot of problem. This is not good for analysis purpose. Okay, so because of it's not a single to the data source, because we have multiple sources and we have to take the data from multiple tables from multiple sources and we have to make it uh, you know in the format that we can do the analysis and we can present the data to the client. That is why this OLTP data is not good for analysis. So what we do, we take the data from all this, the source system and copy this as it is into the bronze server. Okay, from your JSON files or apps or Internet of Things services or anything. Okay, so understood what is the bronze? और इसमें क्या होगा? What is the bronze layer is very, very, simple, uh, concept. That is the, you can think of mirror as it is. डेटा है उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे. सो इसमें सोर्स स्कीमा रहेगा, सोर्स स्कीमा. ओके, हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा रहेगा, हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा रहेगा. वाई? बिकॉज इट इज रीडिंग एंड टेकिंग डेटा एज इट इज. एंड लेट मी टेल यू कि फैब्रिक में कौन से टूल यूज किया जाता है उसमें. फैब्रिक में वी यूज कॉपी डेटा एक्टिविटी, सो डेटा पाइपलाइन. ओके, उसमें कौन सा एक्टिविटी यूज करते हैं हम? कॉपी एक्टिविटी, कॉपी एक्टिविटी यूज करते हैं. अदरवाइज रियल टाइम इंटेलिजेंस वाला ऑप्शन भी वी कैन यूज. ओके, सो स्ट्रीमिंग डेटा इट विल यूज. और फैब्रिक लेक हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फैब्रिक लेक हाउस फॉर storing your data into delta format, file format or raw data in delta format. Okay, so this is what actually we use tool into the Microsoft Fabric or real time analysis also I can write here.
रियल टाइम इंटेलिजेंस। ओके, इसमें क्या यूज करते थे? इवेंट स्ट्रीम we use into uh, real time uh, real time intelligence. Or shortcuts also we use. I'll tell you what is the shortcuts. Okay, let's say you have data somewhere on your local server, तो वो डेटा आपको अगर MS फैब्रिक में लेना है तो we use shortcut. As it is data you can take using the shortcut, but वो local server में रहेगा. Okay, local server means what? योर ऑन प्रेमिसेस सर्वर और योर कंप्यूटर का डेटा एज इट इज आपको क्लाउड में लेना है तो वी यूज शॉर्टकट। ओके, और रियल टाइम इंटेलिजेंस स्ट्रीमिंग मीन्स ओके आपका जो डेटा यहाँ पे जनरेट हो रहा है, व्हाट इज द रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा मीन्स? लेट मी एक्सप्लेन यू आप। ओके, फर्स्ट बिफोर द रियल टाइम द before jumping into the bronze layer, let's say this is the GPay application. Okay, this is the GPay application, and in the Sandeep is generating the transactions, right? बहुत ट्रांजेक्शन इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट? एंड ये डेटा एक डेटा वेयर हाउस, एक उनके डेटाबेस में पड़ा रहा है। उसका डेटा का नाम है OLTP। ओके, सो इसमें डेटा आ रहा है। ओके, बट दिस डेटा इज नॉट गुड फॉर एनालिसिस। जैसे ही इसमें डेटा आएगा, ओके, सो इवेंट स्ट्रीम में विद इन अ 1 मिनट, ओके, सो वो डेटा उसमें चला जाएगा। ओके, दैट आल्सो आई विल टेल यू लेटर। ओके, फेजेस वाइज जाएगा या तो डेटा स्ट्रीमिंग होके जाएगा। ओके, देर आर अगेन, ओके, स्ट्रीमिंग मीन्स इमीडिएटली इट विल गो। फेजेस वाइज, ओके, उसमें कुछ चंक ऑफ डेटा विल बी पुश ऑल टुगेदर। ओके, सो ये स्ट्रीमिंग डेटा, इट्स कॉल्ड स्ट्रीमिंग डेटा। ओके, स्ट्रीमिंग डेटा भी हम यूज कर सकते हैं टू लोड योर डेटा इनटू द ब्रॉन्ज लेयर, टू push your data into the bronze layer. Did you understood what is the bronze layer? Otherwise, let me share. I have uh, PPT for showing the bronze layer. ये PPT बहुत बड़ी हो गई है ना, ज्यादा ही पेज, तो आई एम नॉट able to find actually exact architecture. Okay, here it is. I hope you guys are able to see my screen, right? Yes. Okay. Okay, so you can see uh, this is the bronze layer. This is the bronze layer. Okay, in bronze layer, we get day-to-day data. Okay, so day-to-day data. So by streaming functionality that I have shown you, डेटा स्ट्रीम होके इसमें आएगा। देन ब्रॉन्ज लेयर से सिल्वर लेयर पे डेटा जाएगा, एंड देन गोल्ड लेयर पे डेटा जाएगा। ओके, सो ब्रॉन्ज लेयर, आई होप यू अंडरस्टूड। आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस सिल्वर लेयर एंड गोल्ड लेयर। दिख रहा है कि आपको टेक्स्ट या बहुत ही छोटा दिख रहा है? पीपीटी ठीक से नहीं बना पाया बिकॉज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैड टू गैदर। दिख रहा है सर, थोड़ा थोड़ा। दिख रहा है? ओके, ठीक है। सो सेम आर्किटेक्चर वी विल हैव इन डेव, in test environment and in production environment. Okay, this is for developer, this is for QA people, and this is for production, actual the production layer. Okay, same for in all uh, environment we will have the this medallion architecture. Okay, you can think of this is one workspace.
This is the second workspace, and this is the third workspace. Okay, there would be a lot of other workspace also. Okay, but for your work, this at least two will be there. तीन नहीं है तो दो ही तो रहेंगे रहेगा. तीन है डेव डेव में नहीं रहेगा तो टेस्ट यानी प्रोडक्शन तो रहेगा ही रहेगा. टेस्ट में आप क्रिएट करके बनाओ एंड QA विल prod fix बोलते हैं इसको या तो कुछ अलग अलग नाम दिया जाता है. Okay, so you can see same layer would be there, and actually once your this flow or your this the Medallion architecture is ready to use, you can push it into the uh, production. Okay, let me switch off. Okay, so now we are gonna to create bronze layer. What we are gonna to create? We are gonna to create bronze layer. I think we have already created it. Okay, but हमने हमें पता नहीं था कि what is it about, right? Let me see. शायद create किया है. Okay, हाँ create किया है इसमें शायद हम production use वाला use कर रहे थे ना directly. Okay. So are you all on the same page? Do you know how we have created these folders and all? Yes. Okay. Lakehouse 1, Lakehouse 2. मैंने ही बनाया क्या Lakehouse 1, Lakehouse 2 तो folder और pipelines and data warehouse. ठीक है. Okay, so I hope everybody have created this, the folder. Okay, so lake house में एक ही folder होना चाहिए ना. Okay, so another भी ठीक है. Leave it. I don't remember why did I created this lake house too. Okay, but under this lake house, we have to create Medallion architecture. For Medallion architecture, we create three databases. I don't know about this second database, but first database we understood. This database is for which layer? Bronze layer. Bronze layer में क्या होता है? Raw data रहता है. Okay, raw data means as it is. Okay, it is immutable. This data cannot be changed. 1 minute, guys. Give me only 1 minute. Okay. So sorry for keeping you on waiting. Okay. So we are going to create one that's called bronze server. Okay, bronze lake house. So how to create a lake house? Are you all on the same page or you guys are behind somewhere? कोई भी पीछे है तो बता देना. Because I think ये हमने फर्स्ट दिन में ही क्रिएट किया था. Now we are going to start it from here. Are you all on the same page? Yes. Yes. Okay, great. Okay, so now click on the new atom. How did I come to this page? Okay, let me go. Okay, from the scratch. This is my workspace. Under the workspace, this is the okay. I should start developing from the this DTC dev environment. Okay, but इसी में ही हमने start किया तो let's open it. And this was the folder I had created. ये folder है ना last year नहीं था. This functionality was not there. Okay, 1 year back they have added it. Okay, earlier ये folder नहीं था तो our project was very scattered, but we can actually make it in very good manner. एक folder में सब चीजें डाल सकते हो so that we won't have to find our workspaces and all. Okay, so this is the folder that I have created.
saying DTC project 1. Okay, DTC project 1. And I'll open it. And under this project, what we are going to create? We are going to create a Medallion architecture. So Medallion architecture we are going to create using the Lakehouse. So Lakehouse 1. Okay, again I have created it here. So you also have to create Lakehouse 1. DTC Lakehouse 1, you can write your own name. और DTC लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज आपका तो इन्वायरमेंट अलग यू आर यूजिंग द डिफरेंट वर्क स्पेस ऑफ योर ओन नेम so कुछ भी नेम दे देना but for understanding purpose write there lake house. I'll click on open. If I click on open now, okay, so this is the actually folder inside the folder I have created. Okay, this is the one this is my workspace, this is the folder, and this is the folder inside the folder to manage the hierarchy यानी ठीक से मुझे manage करना है मेरा project. Okay, then what we have to do, I have to create a storage. So I have to click on new atom. देखो पावर बीआई सर्विसेज में सेम ही है ना, पावर बीआई सर्विसेज में भी यू विल हैव हियर लिमिटेड ऑप्शन बट we have a lot of options here now. Okay, now you can see here. Okay, so to get data we have a lot of things. Event streams also you can see. Okay, event stream. Okay, so I'll speak about this again, okay, later. But what we want Lakehouse. We want Lakehouse. Click on Lakehouse. You can see store big data for cleaning, querying, and reporting and sharing. Okay, so I'll click on the Lakehouse and I can give the name to the Lakehouse, Branch Lakehouse, Bronze Lakehouse, right? Bronze Lakehouse. Okay, schema. Now I don't want to create. Okay, but okay, schema. I hope you know what is the schema. Right, schema. If you want to create, that means if you are working for some project or interrelated tables would be under the one schema. Okay, so we have already learned the schema, star schema, snowflake schema, galaxy schema, right? So all tables would be under one schema. So now we don't want this schema. I want table. Sorry, direct the lake house. And under the lake house directly table. If I don't write here, still I'll be able to, what is the default schema? Do you know what is the default schema in SQL? अगर आप कुछ टेबल क्रिएट करते हो तो डिफॉल्ट स्कीमा क्या क्रिएट होता है इन एसक्यूएल सर्वर एसएसएमएस में? स्टार एक स्कीमा का नाम ओडीबी या कुछ तो होता है ना, मुझे याद नहीं है. लेट मी सी. DBO डीबीओ ना? डेटाबेस ओके, ऑब्जेक्ट. देखो डीबीओ होता है, राइट? दिस इज द स्कीमा. अरे ये स्कीमा मैंने क्रिएट किया है. आई हैव शेयर्ड विथ यू दिस स्कीमा आल्सो. ओके, लेट मी स्क्रॉल इट अप. यू कैन सी क्रिएट अ स्कीमा एंड स्कीमा में ecom नाम दिया है. ओके, सो इफ यू आर गिविंग द नेम ऑफ स्कीमा नेम विल बी क्रिएटेड एंड अंडर दैट स्कीमा टेबल विल बी क्रिएटेड. ठीक है? अगर ये स्कीमा आप नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट डीबीओ का स्कीमा क्रिएट होता है. Okay, now I have unchecked it. So that means schema will be DBO. क्लियर है? बाद में तो रिलेशनशिप आप लगा सकते हो, उसको नाम दे सकते हो, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा. आई होप दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू माइट हैव लर्न ऑलरेडी इन एसक्यूएल. ओके, बट ये है स्कीमा. स्कीमा के अंदर टेबल स्ट्रक्चर होता है. तो टेबल किस तौर पे स्ट्रक्चर होते हैं? स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा और गैलेक्सी स्कीमा. Okay, so that I don't want. Okay, so I have unchecked it. So by default, DBO schema will be created. Okay, and just you have to click on create. Schema let you manage the reference object in your lakehouse easily. You can use the default schema to automatically fill in the path. Okay, वही बोल रहा है, default schema use होगा. I'll click on create. जैसे ही मैं create करता हूँ, okay, so I will have here lake house.
This is the first time I'm looking at the lake house. Okay, but what is the lake house I'm created? I have created ब्रॉन्ज लेक हाउस. ओके, इसमें सिल्वर रहने दो या द गोल्ड रहने दो, लुक फील कैपेसिटी ओके सेम ही रहेगी. ओके, बट व्हाट वुड बी द चेंज? नेम एंड व्हाई यू आर गोना टू यूज दिस फॉर. पर्पज इज डिफरेंट. यहाँ पे व्हाट इज द पर्पज? पर्पज इज टेकिंग द रॉ डेटा. व्हाट इज द पर्पज? पर्पज इज टेकिंग द रॉ डेटा. ओके, सो रॉ डेटा हम इसमें से ले रहे हैं. सो नाउ यू नो रॉ डेटा मीन्स व्हाट. ओके, जो भी डेटा क्रिएट किया है एप्लीकेशन से एज इट इज मुझे लेना है. जैसे यू आर हियर, यू टेक द मिरर, यू विल बी सी योर रिप्लिका इन द मिरर, राइट. सो सेम यहाँ पे डेटा है, वो डेटा सेम हम लिफ्ट एंड शिफ्ट कर रहे हैं एज इट इज विदाउट एनी चेंजेस. देयर कैनॉट बी एनी transformation done in this layer. Okay, so this is the one layer. Okay, so now uh, once you created it here, you can see we have files and we have tables. And here you can see lake house. आप एक देख सकते हो कि एक लेक भी दिख रहा है और उसके ऊपर एक हाउस दिख रहा है. Sign is also very important. But along with you will also see the SQL analytics endpoint. मैं इस पे क्लिक करता हूं ना तो यहाँ पे आप SQL भी लिख सकते हो. Okay, you can see schemas. Okay, schemas के अंदर you will be able to write, you know, and store all the data. Delta table. Okay, so this is nothing but delta table. Okay, this SQL analytics endpoint is nothing but delta table. What is the delta table means? What is the delta table? Does anyone have Columnar it? data structure. columnar data structure है. your structure like your SSMS में कैसे data structure होता है ना, same structure. Okay, so same thing you will be able to do it. Okay, it will handle each and every operation. Okay, so same for SQL का database जैसे it will work like. Okay, and if I click on the this lake warehouse, so what is the lake warehouse? What is the lake warehouse? So lake house. What is the lake house? It is combination of data lake and warehouse. Data Warehouse. warehouse. Data warehouse plus So, Data lake. Data lake. data data lake. lake. Okay, so इसमें क्या क्या डेटा हम डाल सकते हैं फिर? Structured, Structure, unstructured, structure, semi-structure, semi-structured. Structure, semi-structure, and unstructured. unstructured data set. Okay, so you, I hope you are able to see कि कैसे data sorry lake house दिखता है, right? So this is okay. So file जहाँ पे लिखा जाता है, that means you can write here structure sorry unstructured data. So unstructured files में देखो, files में आप वीडियो भी डाल सकते हो, राइट, इमेज भी डाल सकते हो, राइट, ऑडियो फाइल भी डाल सकते हो, एंड स्ट्रक्चर के लिए टेबल भी है. स्ट्रक्चर के लिए टेबल भी है जहां पे आप एसक्यूएल से डेटा रीड कर सकते हो, है ना. इजंट इज इजी समझने के लिए, तो समझ में इजी आ रहा है अभी, राइट. इट्स नॉट Yes. लाइक कि सर के ऊपर जा रहा है. ठीक है, लेट मी गेट रीड ऑफ दिस नाउ. ओके, नाउ व्हाट इज आवर आइडिया? Our idea is now I have tables. I hope you all have created tables. जिसके जिसके पास अजूर का सब्सक्रिप्शन है, मेरे पास है. अगर नहीं है तो आई विल बी शेयरिंग विद अविनाश. यू हैव. ओके, सो कुणाल आई थिंक यू आल्सो हैव इट. ओके, सो अगर आपको यूज करना है तो यू कैन यूज इट योर ओन. मेरा यूज करना है तो लेट मी नो, बट मेरा आप अभी यूज कर पाओगे, बाद में नहीं, बिकॉज आई एम यूजिंग फ्री वाला वर्जन. एंड जैसे मैं सिस्टम बंद करूंगा तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर से मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा. ओके, so this is actually the functionality is very good to save my points. ओके, अगर आपको खुद का यूज करना है तो क्रिएट करो, आई विल बी गाइडिंग यू. अगर बाद में प्रैक्टिस करना है तो. ओके, सो बट आई थिंक फॉर नाउ इट्स फाइन. ओके, बाय लेटर यू कैन create it again and do the practice. Okay, now I have created bronze layer.
Okay, so what I also have now tables. I also have tables. So ब्रॉन्ज लेयर पे मुझे क्या करना है, एज इट इज डेटा कॉपी करना है. दिस इज माय फर्स्ट टास्क इन एमएस फैब्रिक. और ये काम किसके लिए, डेटा इंजीनियर का है. ये काम किसका है, डेटा इंजीनियर का है, बीआई का नहीं. इफ यू आर लर्निंग बीआई फॉर द फैब्रिक, ओके, इसको जस्ट समझो. प्रैक्टिस नहीं किया तो भी चलेगा, बट प्रैक्टिस करो, बिकॉज कभी ना कभी तो आपको डेटा इंजीनियर में मूव होना ही है, राइट. एमएस फैब्रिक इज वेरी इजी टू मूव इनटू द डेटा इंजीनियरिंग फील्ड. ओके, सो बट दिस टास्क इज फॉर डेटा इंजीनियर. ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं एंड नेक्स्ट स्टोरेज में करते हैं, दैट सिनेरियो वी विल सी in next day. Okay, but this scenario we are going to see today. Okay, entire, let me tell you the entire picture what we are going to see. Okay, so entire picture is like this is our OLTP का data we are taking into the bronze layer. Okay, then from the bronze layer we are taking data into the silver layer. Okay, so what is the silver layer, there is a meaning, I'll tell you tomorrow, and then we are going to push the data into the gold layer. Purpose of each layer is different. Purpose of each layer is different. So what could be a okay, so in short, आज मैं थोड़ा आपको बता सकता हूँ कि what is the purpose. ये raw data के लिए है, raw data. ये है clean data के लिए, cleaning data, validation data. Okay, all things will be done here. And this is pure data, aggregated data. You can think of your data warehouse. Okay, and this is the data we use for our analysis. Okay, we understood in depth. ये भी हम नेक्स्ट सेशन में अंडरस्टैंड करेंगे इन डेप्थ. ओके, नाउ चलो अभी हमारे पास क्या क्या है, वी हैव डेटा सेट्स. ओके, डेटा सोर्सेस. वी आल्सो हैव क्रिएटेड अ ब्रॉन्ज लेयर, बट वी हैव नॉट क्रिएटेड अ पाइपलाइन. व्हाट इज दिस, ये डेटा कैसे लोगे, हाउ डू वी टेक द डेटा. हमने डेटा वेयर हाउस में देखा था, हाउ डू वी टेक द डेटा फ्रॉम सोर्स सिस्टम, हु कैन टेल मी. ये डेटा से एक दूसरे डेटा सोर्स पे कैसे डेटा लेते हैं हम, यूजिंग विच एप्लीकेशन. विच वन. Azure. नहीं नहीं, एप्लीकेशन, बट व्हाट इज द नेम, अजूर वगैरह ठीक है, कैसे क्या है टेक्निक यूज लेने का, भूल गए यार आप सब लोग. Pipeline. टेक्निक हाँ, डेटा मैनेजमेंट. पाइपलाइन, Pipelines. करेक्ट. Data ईटीएल यूज pipe. करना है. ईटीएल का कीवर्ड भी आप भूल गए यार, और इस पे तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्सट्रैक्ट ईटीएल. राइट, वी हैव टू यूज द ट्रांसफॉर्मेशन. ईटीएल. राइट, एक्सट्रैक्शन वी आर गोना टू डू, ट्रांसफॉर्मेशन वी आर नॉट गोना टू डू इट हियर, बट एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट एंड इंजेक्ट कर रहे हैं, राइट, लोड तो कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट एंड लोड कर रहे हैं विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन. हियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट हैपनिंग, but extraction and loading तो हो रहा है, right. So we are going to use ETL tool. What is the ETL tool we have in our MS Fabric? एडीएफ Data Factory. डेटा. Okay, so ADF जो है वो है Azure में, and same thing we have in ADLS. हाँ, एडीएलएस. yeah, what is ADLS. Sorry, confused. Azure Data Lake Storage. Okay, वो तो storage है, right, but we are Yes, okay. speaking about Pipelines. pipelines. Yes. Perfect. So डेटा pipelines. फैक्ट्री. Okay, so we have to create a pipeline. Okay, Mhm. and we can create a data factory का explore हम कर सकते हैं. So data factory, Azure data factory is in Azure and data factory is in our MS Fabric. ये दोनों कंपोनेंट सेम ही है, 90% तो सेम ही है, डोंट गेट कंफ्यूज. दोनों टूल्स सेम है, बट अगर आप Azure पे यूज कर रहे हो तो दैट इज Azure data factory. इफ आर यूजिंग इन MS Fabric तो वो है data factory, Fabric data factory. ठीक है, कैन आई गेट रीड ऑफ ऑल दिस ड्रॉइंग and let's jump back to our project and create a pipeline. Okay, so ये फोल्डर भी हमने ऑलरेडी क्रिएट करा है. आपके भी सिस्टम में है क्या क्रिएटेड फोल्डर पाइपलाइन. Yes. यस. Great. Okay, so click on the pipe, create pipeline. Now click on the pipeline.
और इसमें हम पाइपलाइन बनाने वाले हैं, राइट। सो सोर्स सिस्टम से डेटा लेने के लिए ये जो पाइपलाइन है कॉपी के लिए, ओके। सो व्हाट एक्टिविटी वी यूज, आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर। ओके, फॉर ब्रॉन्ज लेयर के लिए व्हाट आर द टूल्स वी आर गोना टू यूज, डेटा पाइपलाइन। डेटा पाइपलाइन में कॉपी एक्टिविटी करने वाले हैं, या तो ये भी बाकी की चीजें यूज होती है। डेटा लेक हाउस जो है वो भी हम स्टोरेज के लिए बनाते हैं। डेटा लेक हाउस वी हैव क्रिएटेड फॉर ब्रॉन्ज लेयर, ठीक है। नाउ लेट मी गो बैक एंड क्लिक ऑन न्यू एटम अगेन। यहाँ पे आके यही दिखेगा, और इसमें सब ये एटम यहाँ पे मिलेंगे आपको। ओके, दीज आर द ऑल एटम्स यू विल बी एबल टू सी इट हियर। Okay, so here what we have to create? We have to create pipeline. Pipeline. Are you able to see the pipeline? Both are the same. Don't confuse कि मैं prepare वाला ले लो या get data वाला ले लो. Take anything. Inject, clean data transformation. But if I jump into it, everything is same. So pipeline one. एक इसके लिए pipeline हम कर रहे हैं Lakehouse. injecting data into the bronze layer. Lakehouse. Bronze layer. Bronze layer. Bronze layer. Inject in bronze layer. Inject data in the bronze. कुछ भी नाम दे सकते हो meaningful and create it. Click on create. Okay. So this is the pipeline. This is the pipeline. Okay. So I hope the people who have gone through the ADF recording. Okay. So ADF का जो options है, ठीक है, थोड़ा navigation is here and there. But ADF में जो options है, you will be able to see here in data factory. This is in pipeline data factory. Okay. So you can see in the home, we are able to see here option to save as. Okay, if you want to save this file. Okay, anyway, we have to save it if you are creating something. Okay, export import, ये ठीक है. And validation का option we have in Azure Data Factory. Same we have here. Run का भी उधर है, यहाँ पे भी है. Schedule का है, trigger का है. Okay, view history है. Copy job, copy data, data flow we have here, right? We can create. Notebook is something new we have here, but data factory में है नहीं. Okay, so notebook where you will be able to see, you will be able to see it in Synapse Analytics. Synapse Analytics, okay, I think nobody knows about the Synapse Analytics, but data engineering में हम Synapse Analytics use करते थे from Azure. Synapse Analytics, and Synapse Analytics में सेम नोटबुक का ऑप्शन था, उन्होंने एज इट इज कॉपी किया है, ये उठा के फैब्रिक में दिया है. आर यू एबल टू इमेजिन कि फैब्रिक कितना उन्होंने स्ट्रॉन्गर बनाया, और कैन यू इमेजिन द करियर इन द फैब्रिक. फैब्रिक अभी भी बहुत डिमांड में है, बट फ्यूचर में यू कैन थिंक ऑल इन वन. उसने उन्होंने कैसे कैसे ऑप्शन दिए हैं. यू डोंट हैव टू इंटीग्रेट और बाय अनदर और सब्सक्राइब फॉर अनदर Yes. the Applications tool and applications and all. services. ये all in one stop solution है, right? Unified solution we can say. Okay, and this is again lookup activity. Lookup activity we are gonna to, I'll tell you lookup activity में क्या होता है. Let's say we have here employee table. Okay, and few employee have resigned it. Okay, and it employee table already आपका ब्रॉन्ज और गोल्ड लेयर पे चला जा रहा है. बट ओके, ये जो एम्प्लॉय यहाँ पे जा रहे हैं, फ्यू एम्प्लॉय आई हैव टू डिलीट विच हैज बीन रिजाइन. ये रिजाइन टेबल एंड ये इसमें सब एम्प्लॉय है, ऑल एम्प्लॉय, एंड यहाँ पे रिजाइन एम्प्लॉय. ओके, रिजाइन एम्प्लॉय अगर उसमें डिलीट करने हैं आपको, ओके, तो वी कैन यूज लुकअप एक्टिविटी. ओके, ये लुकअप एक्टिविटी आई थिंक इवन लुकअप एक्टिविटी अभी यूज करने की जरूरत नहीं है, ये हम यूज करते थे आज आज एडीएफ में, एजूर डेटा फैक्ट्री में. बट ये भी करने की जरूरत नहीं, एसक्यूएल से ही काम अभी तो इजी बन गया है. ओके, यानी कुछ अगर चीजें आपको लुकअप करके
डिलीट करनी है या कुछ एक्टिविटी करने हैं, तो दैट टाइम वी कैन लुक अप फॉर स्पेसिफिक थिंग्स. You can use SQL code here. I'll let's not get okay itne abhi in the intermediate topic. I'll tell you later. So we have invoke pipeline. So pipeline ka we can make a decision ki which pipeline should go first, and accordingly we can invoke the pipeline. So I'm just telling today about the UI. UI के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. वैलिडेशन क्या क्या है. वैलिडेशन मीन्स इफ यू हैव क्रिएटेड सम पाइपलाइन हियर, यू कैन डू वैलिडेशन. ओके, वैलिडेशन अगर करेक्ट हो रहा है तो यू कैन रन इट. बट ये रन मैनुअल हम करते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए. बट हमेशा इन रियल टाइम व्हाट हैपन कि मिडनाइट में आफ्टर 12 ये ऑटोमेटिकली डेटा जो है, लेट्स से आवर इंडिया टाइम डेज एंड एट 12 AM, राइट. 12 AM को डे एंड होता है. एम आई राइट. और ये Yes. सेकंड डे स्टार्ट होता है. तो पहले डे का जो भी डेटा है, ओके, बिफोर दिस 12 AM का डेटाबेस में जो भी डेटा है, ओके, सो वो डेटा आपको अभी क्या करना है, दूसरे डेटा सोर्स में डालना है. तो बराबर 12 के बाद हमें याद नहीं ना, हमें मैनुअल करना पड़ेगा. ओके, अलार्म लगाना पड़ेगा, राइट. एंड वी हैव टू क्लिक ऑन रन, एंड फिर वो तभी वो रन हो गया, राइट. इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैनुअली, स्केड्यूल करो. एट 12 PM को डेटा खत्म हो रहा है ना, तो 12:30 को डेटा आप यहाँ से यहाँ पे डालना स्टार्ट कर दो मिडनाइट. ठीक है. तो फॉर दैट वी कैन स्केड्यूल इट हियर. ओके, वी कैन आल्सो ट्रिगर इट. ओके, आई टेल यू ट्रिगर. ओके, ट्रिगर में भी आप डेटा पाइपलाइन ही रन कर पाओगे. और यहाँ पे जितने भी डेटा आपके पाइपलाइंस रन हो गई है उसके पूरी हिस्ट्री देख सकते हो कि हाउ मेनी पाइपलाइंस हैव बीन सक्सेसफुली what we can say uh, run or fail, ये सब यहाँ पे देख सकते हो. Let's say some people are saying कि I have not received the data. Okay, then they will backtrack. Then you will come here into the your history में देखोगे कि इसमें pipeline let's say hundreds of pipelines you have. इसमें से फेल कौन सी हुई है, राइट. फेल हुई तो you will rectify, you will debug that one. And this is work is again for data engineering people. इसमें कोई भी कोड नहीं अपार्ट फ्रॉम दिस वन नोटबुक. इसमें ही कोड है. उसमें क्या क्या कोड है, इसमें पाइथन है, उसमें पाइस्पार्क है. ओके, ये आपको दोनों नहीं आता है तो ये स्किल से भी आप बना सकते हो आपका पाइपलाइन. बट वी डोंट हैव एक्सपर्टीज इन द पाइपलाइन. ओके, सो एसक्यूएल में हर चीज होती है. एवरीथिंग कैन बी डन इन द एसक्यूएल, बट lot of logic we have to write here. Okay, thousands and thousands of code आपको लिखना पड़ेगा SQL में, which is actually easy way using the PySpark. PySpark is coding language. This is the query language. SQL is the query language. तो उसमें query लिखना पड़ता है logically. But PySpark has कोडिंग लैंग्वेज. तो कोडिंग में आप जैसे चाहिए वैसे आप मॉडिफाई थिंग्स कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, फंक्शन नहीं बना सकते हो, कॉल कर सकते हो डेटा. सो दैट इज वाई दिस इज द इजी वे. और पीपल इसमें इजीली मिल जाते हैं, एसक्यूएल में नहीं मिलते. रियलिटी इज दैट कि एसक्यूएल की एक्सपर्टीज कम है हमारे पास. स्पाइसपार्क इजी है, पाइथन इजी है. ओके, दैट इज वाई वन ऑफ माई फ्रेंड एक्चुअली ही इज अर्निंग 45 lakh rupees because he is very strong in SQL. उसको बाकी का नहीं आता है. देखो, गेनिंग पैकेज ऑफ 45 lakh alone in one skill is very difficult. So with SQL you have to learn lot of other technologies, right? But अगर SQL भी strong होता है तो you can imagine कि आपको बहुत ही डिमांड आने वाला है. That is why SQL is actually high in the market. ओके, चलो अगेन. आप ओके, एसक्यूएल इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, बट वी आर गोना टू यूज स्पाइसपार्क. स्पाइसपार्क के लिए पाइथन की जरूरत होती है, बट नॉट एन एंटायर स्पाइसपार्क. 10-12 से घंटे के सेशन जो कोर पाइथन है वही आपको आना चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि फुल. ओके, बट डू यू हैव टू लर्न इट नाउ? नो. पाइसपार्क में आपको थोड़ा एक बेसिक चीजें बताऊंगा, जैसे हम डेटा कैसे रीड कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट, राइट, डिलीट, अपडेट, ये जो चीजें होती है ना वो मैं आपको स्पाइस पार्क में करके दिखाऊंगा. ओके, सो लेटर ऑन, ओके, यू कैन go through the Python and all once you jump into the job. Okay, again,
some amount of time spent 2-3 years, उसके बाद आप you can start learning this. चलो, okay, so now activity पे आ जाता हूँ मैं. Okay, I hope there is no any concern under this tab, right? You got an idea कि ये सब यहाँ पे options है. चलो, इतने जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा वैलिडेशन क्या है, बट आई होप कि यू गॉट एन यूआई आइडिया कि इसमें क्या क्या ऑप्शन हम कर सकते हैं, राइट? Yes. शेड्यूलिंग कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, जॉब भी कॉपी जॉब भी कर सकते हैं, पाइथन के भी कुछ कोड लिख सकते हैं नोटबुक में, राइट? इतना तो आपको समझ में आएगा. एक्टिविटी में कॉपी जॉब, कॉपी डेटा, डेटा फ्लो भी कर सकते हैं. नोटबुक में भी ऑप्शन है गेट मेटा डेटा इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट. मेटा डेटा मैं पता है ना कि आपको क्या है. लेट मी टेल यू. ओके, दिस इज समथिंग न्यू हियर, राइट? सो दिस इज योर टेबल. दिस इज योर टेबल एंड दिस इज कॉलम ऑफ योर टेबल. सो कॉलम में क्या क्या लिखा रहता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलम? क्या क्या होता है? कॉलम नेम. column name, ओके, data देन type, data डेटा type, टाइप, देन Data type. constraints. right, all the constraints. Okay, all this information will be, you know, you'll be able to fetch using get metadata. Data about data. Meta about data or data about data. Okay. Then the again lookup activities, the same scripting is also here. We have store procedure, we have variable, we have if condition and for each condition that I will show you later. Okay. If जैसे स्टेटमेंट है ना वही यूज करता है. इफ एंड each हमने जो पढ़ा है ना पावर बीआई में, वही इसमें. पावर बीआई में हमने डैक्स कोड लिखा है, इसमें कुछ कोड नहीं है. ये और भी इजी है. दिस इज फार इजी देन योर कोडिंग लैंग्वेज. यू डोंट हैव टू राइट हियर एनी कोडिंग. एंड इनोक भी है. इसमें क्लिक करने के बाद देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज. ये एक्टिविटीज हम पढ़ने वाले हैं, पूरे एक्टिविटीज वी आर गोना टू लर्न. ओके, फॉर डेटा इंजीनियरिंग एंड बीआई के लिए जितनी जरूरत है. ओके, सो उतना ही चीज है. यही पेज है कि जो डेटा इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज रेस्ट ऑल थिंग्स है ना बीआई के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ये आपको अब अगर आप सीनियर डेवलपर हो तो ही आपको शायद इसका एक्सेस मिलेगा. Otherwise, for Power BI developer, you won't get access to this tool. But if you write this in your resume कि MS Fabric आता है तो बहुत जल्दी शॉर्टलिस्ट होता है. आपको काम उसके ऊपर करने के लिए चांस मिले या ना मिले, बट कॉल के फ्रीक्वेंसी विल बी लाइक 10x. ओके, MS Fabric, Power BI with MS Fabric. Power BI with MS Fabric means you have become, the professional in the data engineering or data domain or business intelligence. Great. Okay, so let me click on run. Run में वही options है. Validate run. I think I have already discussed about this. And this is the view में options कि आपको gym कितना. ये तो just up to manage your UI and all. Okay, so did you understood the UI of Sir, there is one pipeline? also, there is one option also like Databrick. हाँ, Databricks है ना. Okay, did you find here Databricks option? कहाँ पे देखा आपने? होम में देखा था या एक्टिविटीज पे देखा Home था में. शायद. एक्टिविटीज में सर, एक्टिविटीज एक्टिविटीज में या राइट राइट लास्ट कॉर्नर लास्ट. और जा राइट 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 यस. ओके, ये डेटाब्रिक्स इंटीग्रेशन. ओके, सो इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेट किया हुआ है डेटाब्रिक्स. ओके, सो ये कोड जो लिख सकते हो ना आप नोटबुक में, ओके, वो ऑलरेडी आप यहाँ से कर सकते हो. एंड डेटाब्रिक्स में भी अगर आपने कुछ पाइपलाइन किया है वो भी आप कॉल कर सकते हो इसमें. डेटाब्रिक्स में पाइपलाइन किया तो ये सब इंटीग्रेटेड है. बिकॉज डेटाब्रिक्स इज नाउ वेरी फेमस इन द मार्केट टू हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. ओके, बट वो डेटा किसी और ने अगर ऑलरेडी पाइपलाइन डेवलप करी है डेटाब्रिक्स में तो वो भी आप कॉल करके आप यहाँ पे वो स्टोर कर सकते इंटीग्रेट कर सकते हैं. हैं. बाकी कुछ नहीं. ठीक है, गुड. Discard. Let me go back again. Okay.
हियर। और कुछ डाउट है? हाँ सर, एक वो सिमेंटिक मॉडल और मेटा डेटा में क्या डिफरेंस है? सिमेंटिक मॉडल में आप एक एक मॉडल, एक टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, सो लेट्स से you have tables, multiple tables in your lake house. ओके, तो लेक हाउस के लिए आपको ये टेबल है ना, एक दूसरे को कनेक्ट करना है, बिकॉज ऑल टेबल्स आर रिलेटेड। इसमें से 5 कॉलम्स आ रहे हैं, इसमें से 1 कॉलम आ रहा है, इसमें से 2 कॉलम आ रहे हैं, इसमें से 10 कॉलम्स आ रहे हैं, राइट? तो ये सब आपको कॉलम चाहिए, एंड इस कॉलम के लिए आपको बनाना पड़ेगा, रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, राइट? देन ओनली यूल बी एबल टू यूज इट इन पावर बीआई। ओके, तो इसको जो हम ये रिलेशनशिप बना रहे ना, उसको बोलते हैं सिमेंटिक मॉडल। Semantic model. ओके, दिस इज द सिमेंटिक मॉडल। और इस सिमेंटिक मॉडल फिर यू कैन एक्चुअली कनेक्ट दिस योर पावर बीआई टू दी वन लेक, और सिमेंटिक मॉडल पे क्रिएट करो। सिमेंटिक मॉडल पे कनेक्ट करने के बाद देन डायरेक्ट लेक से वो कनेक्ट हो। ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी हैंडल द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये डेटा कहाँ पे है? डेटा लेक पे है, सॉरी, वन लेक पे है, यूर लेक हाउस में। लेक हाउस इज ऑन द टॉप ऑफ वन लेक। फिर उसके ऊपर आप सिमेंटिक मॉडल बना रहे हो और उससे डेटा कनेक्ट कर रहे हो। इट्स कॉल्ड डायरेक्ट लिंक। और डायरेक्ट लिंक में क्या होता है कि विल बी एबल टू एक्सप्लोर ऑल द फंक्शंस जो हम डायरेक्ट क्वेरी में नहीं कर सकते। ओके, और डायरेक्ट क्वेरी में बहुत सारा परफॉर्मेंस का इशू आता है, इसमें वो रिड्यूस हो जाता है, परफॉर्मेंस इसमें बेटर रहता है। ओके, सो फॉर दैट वी क्रिएट सिमेंटिक मॉडल। ये भी हम एग्जांपल देखने वाले। ओके। गुड। ठीक है, बट आज पाइपलाइन नहीं क्रिएट कर पाए हम, बट यस नेक्स्ट टाइम में आई होप कि जस्ट गो थ्रू द वीडियो रिकॉर्डिंग। ओके, मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन बोला है, अदरवाइज यू डोंट हैव टू गो, जस्ट ये देखो, राइट? लुकअप वगैरह ये एक्टिविटीज है, एक दो बार देखो, सो दैट आपको ऑप्शंस थोड़े पहचान के होंगे। एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट बिल्डिंग एन पाइपलाइन। सो फर्स्ट पाइपलाइन वी आर गोना टू क्रिएट इट फ्रॉम द अपकमिंग सेशन। ओके, आज डेटा लेक ही बना पाया हम, ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज लेयर हम पढ़ पाए कि व्हाट इज द ब्रॉन्ज लेयर। ठीक है, नेक्स्ट लेयर भी वी विल बी क्रिएटिंग लेटर। सो इजी है गाइज समझने के लिए। ओके, डेटा इंजीनियरिंग सुन के लोगों को लगता है कि अरे क्या है, राइट? बट दिस इज द डेटा इंजीनियरिंग। आई होप दिस इज वेरी वेरी इजी। ओके, डेटा अभी कैसे कि दिस इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू जंप इनटू द आईटी, बिकॉज अभी आपको है ना कोई ज्यादा डेवलपर भी नहीं मिलेंगे और ट्रेनर भी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहां पे? ऑप्शंस के बारे में कि ये कैसे, बट एक्चुअल एक्चुअल वर्क कैसे होता है उसके ट्रेनर भी नहीं है मार्केट में। तो प्रॉब्लम यही है, इसीलिए आप जितना पढ़ोगे उतना पढ़ के डेटा इंजीनियरिंग फैब्रिक के लिए टारगेट करोगे ना मार्केट के लिए, तो यू विल बी एबल टू गेट जॉब वेरी क्विकली, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन आस्क मी सर क्वेश्चन, अदरवाइज पैरामीटर्स क्या है? व्हाट इज पैरामीटर्स? डायनेमिकली थिंग्स वी कैन एक्चुअली डू, जो मैन्युअली करते हैं वेट करना पड़ता है, इंस्टेड ऑफ यू नो डूइंग द मैनुअल टास्क वी कैन डू इट डायनेमिकली, ऑटोमेटिकली। वो मैं आपको दिखाऊंगा। वेरी गुड क्वेश्चन, बट या वी आर गोइंग टू सी द डायनेमिक थिंग्स लेटर। ओके। Sir, one question regarding the roles, like workspace roles. हम्म। So whatever the roles we create in Fabric, so same role we have to create in service also, Power BI service also. हाँ हाँ हाँ, रोल तो सेम ही है, but we will have as AD group for roles. Okay, Okay. so the people will be, you will have to raise the request. It's not your work. Okay, so admin people will decide the roles, and AD group will be created, and you will be pushed into this AD group. ऐसे ओके, अभी तो हमने ईमेल आईडी पे दिया है, बट रियल टाइम में वी आर नॉट अलाउड टू गिव दिस सिंगल। वैसे भी दे ही सकते हैं, ना नहीं है, मना नहीं है, बट मोस्ट structure way is to you get in add to that AD group. What is the AD group? Does anyone aware? Do you all aware about the AD group? AD. AD, हाँ। दिस इज वेरी अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन आपने पूछा। ओके, लेट मी टेल यू।
Hope you guys are able to see my screen. AD group. AD is nothing but active directory. एक्टिव डायरेक्टरी में क्या होता है कि लेट से देर आर इन माय टीम देर आर 50 peoples. Okay, and those 50 peoples have been divided into the different the department. Okay, and department wise let's say एक डिपार्टमेंट है डेवलपर का. डेवलपर के लिए जितने भी ईमेल आईडी है, जितने भी एम्प्लॉय उसका ईमेल आईडी इस एडी ग्रुप में डालेंगे ताकि सब डेवलपर के लिए सेम एक्सेस मिले, सब एडमिन के लिए अलग एक्सेस मिले, सम यूजर के लिए अलग एक्सेस मिले ओनली व्यू के लिए. तो those AD groups are getting created and accordingly those access is also provided. इंडिविजुअल नाम हम नहीं डाल सकते. ओके, सो एडी ग्रुप के लिए ही एक रिक्वेस्ट दिया जाता है कि इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सेस समथिंग दैट मींस यू आर नॉट एडेड इनटू द एडी ग्रुप दैट एज अ डेटा डायरेक्टरी. यानी वो एक टीम होती है ना, फैमिली ऑफ टीम, डेटा इंजीनियर की टीम, राइट. डेटा और सीनियर का भी एक्सेस वो भी अलग ग्रुप में ऐड करना पड़ता है. एडमिन एक्टिविटी का अलग ग्रुप है. कैसे करते हैं, वो एक्सेस सब कस्टमाइज होते हैं. अगर उनको एक लेट से एक आपको एक ग्रुप बनाना है और उस ग्रुप को कुछ ही मुझे एक्सेस देना है, सब एक्सेस नहीं देना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो यहाँ पे मैंने जो आपको एक्सेस दिखाए थे ना, बट हाँ इंटरव्यू में आप वही एडमिन कंट्रीब्यूटर्स मेंबर्स वही बता दो. बट इन रियल टाइम व्हाट हैपन, 1 मिनट, मैं जस्ट वो पीपीटी आपको शेयर करना चाह रहा हूँ जहाँ पे ऑल एक्सेसेस है. हाँ, होप यू गाइस आर एबल टू सी माय स्क्रीन. ओके, सो इंटरव्यू के टाइम पे आपको यही बताना है कि वी हैव दिस 4 roles: एडमिन रोल्स, मेंबर्स रोल, कंट्रीब्यूटर रोल, व्यूअर रोल. बट यू कैन कस्टम ये भी रोल. इसमें मुझे लेट से कि एक कस्टम रोल बनाना है जिसको मुझे ए भी एक्सेस देना है, एड मेंबर का भी एक्सेस देना है. ओके, और इसमें कुछ एक्सेस देना है इसे रैंडमली. तो ए भी एक ग्रुप बना सकता हो, एडी ग्रुप. ठीक है, वो भी बना सकते हैं. ओके, बट मोस्ट ऑफ द कंपनी यही फॉलो करती है, तो यही बनो वी हैव एडमिन एक्टिविटी. ये मेंबर इसका एक ग्रुप बनाएंगे. इसमें लेट से 4 people रहेंगे या तो 10 peoples रहेंगे. मेंबर्स में लीड एसएमई बहुत सारे लोग रहेंगे तो उसमें 20 लोग रहेंगे. कंट्रीब्यूटर में ऑल डेवलपर्स वगैरह आएंगे. ओके, और व्यूअर में तो एंड यूजर आएंगे. सो इसके क्या रहेंगे, बंच ऑफ ईमेल आईडी रहेंगे. व्यूअर के हंड्रेड्स ऑफ ईमेल आईडी एक ग्रुप में डालेंगे. ओके, तो क्या होगा कि एक ग्रुप को, उस ग्रुप को मैंने इसे ईमेल आईडी इस पे डाला तो वो सब 100 peoples विल बी एबल टू व्यू दैट रिपोर्ट. लेट से डेवलपर अगर यहाँ पे 15 डेवलपर्स है, मैंने एक्सेस दे दिया तो कंट्रीब्यूटर का सबको एक्सेस मिलेगा. ओके. ऐसे हायरार्की किया जाता है सब, यानी एक्सेस के ऐसे एडी ग्रुप बनाया जाता है. एंड अगेन एडी ग्रुप इसके लिए भी बना जाता है. ओके, वहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं आपके इवन फॉर इस लेवल के लिए. दिस इज दी फॉर वर्क स्पेस रोल लेवल. एंड कौन सा आपको वर्क स्पेस का एक्सेस देना है उससे के लिए भी आपको अगेन एडमिन विल डिसाइड. और आपके जस्ट ईमेल आईडी पे लिखेंगे लेट्स से कि नाउ दिस हैज बीन रोल हैज बीन डिसाइडेड नाउ, राइट. एंड अगेन बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट दे विल डिसाइड कि आपको कौन सा ये देना है. एक्चुअली कहाँ पे, लेट मी गो बैक एंड लेट मी ओपन एन वर्कबुक. ओके, इस वर्कबुक में आप कौन से सॉरी वर्क स्पेस में कौन से वर्क स्पेस के लिए आपका प्रोजेक्ट है. ओके, दे विल क्लिक ऑन दैट वर्क स्पेस एंड वो असाइन करेंगे यहाँ पे मैनेज एक्सेस में. और वही दिस इज द वर्कबुक and this is what actually I'm going to access for, and only this workbook will be able to you know gain and that access, not another workbooks. ठीक है, ऐसे हर जगह पे उन्होंने कंट्रोल करके रखा है. गुड. और कुछ डाउट है, कुछ सेशन है? शुभम, डिड आई अंडरस्टैंड? ओके, डिड यू अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके,
थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में बता दिया, बट और वो यू जो जस्ट। मेल आईडीज रहेंगे वो क्लाइंट्स के मेल आईडीज रहेंगे ना, हम जो कंपनी में काम करते हैं उनके नहीं रहेंगे ना? Okay, let me tell you. Okay, so there are two companies, right? One is uh, the service-based company, and another is product-based company. अगर आप प्रोडक्ट-बेस्ड कंपनी पे काम कर रहे हो, राइट, तो वही ईमेल आईडी रहेगा आपका जो रहेगा। अगर आप क्लाइंट बेस्ड सर्विसेज पे काम कर रहे हो, तो एक क्लाइंट क्या करेगी, कोई तो क्लाइंट का काम रहेगा। क्लाइंट यानी जो प्रोडक्ट ओनर रहता है ना, लेट्स से कि हम्म आप कौन से काम, एक क्लाइंट का नाम ले लो, बार्कलीज, या तो लेट्स से आई एम वर्किंग इन अ टीआई, राइट। ओके, ये टीआई खुद की कंपनी। ओके, टीआई का प्रोजेक्ट इंटरनल भी है, आउटसाइड भी है। ये टीआई का प्रोजेक्ट वी हैव इन एक्सेंचर, वी हैव इन टीसीएस। लेट्स से यू गॉट ए सिलेक्टेड इनटू द टीसीएस। टीसीएस का एक ईमेल आईडी रहेगा एंड टीआई का एक ईमेल आईडी रहेगा। टीआई का जो ईमेल आईडी है ना, उसका आपको ईमेल आईडी पे रोल मिलेंगे, नॉट एन टीसीएस। टीसीएस का तो जस्ट फर्स्ट लॉग इन करने के लिए रहेगा, वन ऑथेंटिकेशन, एंड सेकंड ऑथेंटिकेशन वुड बी फ्रॉम टीआई। बट इफ यू जंप इनटू दिस कंपनी, तो उसका आपको दूसरे पास दूसरा लॉग ईमेल आईडी होगा ही नहीं, ओनली टीआई का रहेगा, तो वही लिंक किया जाएगा। अंडरस्टूड शुभम? यस सर। सर्विस इंडस्ट्री में दो ईमेल आईडी हाँ। मिलते हैं, एक टीसीएस का, और जिसके लिए हम काम कर रहे हो। अगर प्रोडक्ट है तो उसमें कोई क्लाइंट है, उसमें तो कोई है ही नहीं, तो आप खुद कंपनी के लिए काम कर रहे हो। देर इज नो एनी सर्विस अंडर दैट यू आर गोना टू वर्क। स्वप्निल, कुछ है डाउट? स्वप्निल को तो ये सब, और स्वप्निल इज ऑलरेडी वर्किंग इन दिस इन्वायरमेंट, नो सो आई मैम। थिंक। चलो देन गाइस, विल सी आई थिंक ऑन फ्राइडे ना।